So I will discuss here the opinion of the Socrates or the Socrates ideas about morality, Socrates ideas about the important way of life, what should be the way of life, because in ethics we are learning what would be the way of life or what ought to, what ought not. So basically we are try to contemplate such kind of a question. We will try to find out the answers in the language of this. इनका क्या ओपिनियन, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मोरल होता है, क्या इमोरल एक्शन, ठीक है, और किस तरह की लाइफ लीड करनी चाहिए. बिकॉज वी पीपल आर लिविंग इन अ सोसाइटी, so every individual's role is very very important in society for overall development of that individual as well as the other member to maintain the society, specifically the peace as well as the growth and development. So here, as the people started socializing, living together, as I have said, now such kind of a questions raised or arise. What kind of behavior once reflected, what kind of conduct is the moral conduct? Such kind of a question arises when the man has started living. Okay. Now let's understand. So these are the three one I will discuss and their opinion. Then another thinkers I had mentioned here or put here on the slide is Immanuel Kant, and then the Jeremy Bentham, as well as the J.S. Mill. Okay. Now when you look at these thinkers, all these thinkers which is on this slide here, okay, having the different opinion, having different opinions uh, about the moral life, about the conduct of as well as the behavior of an individual, their opinion is quite different. Now, the opinion of Socrates, Plato, and Aristotle we will cover in specific theory. The theory which is designed by them, given by them, is called virtue. What it is called? The virtue theory. Okay. The idea which is given by the Immanuel Kant is known as deontological theory, and the idea given by Jeremy Bentham and J.S. Mill is known as the consequentialism, okay, or utilitarian. So that approach is also known as teleological theory. इनके कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जर्मी बेंथम, जेस मिल का कॉन्सेप्ट जो है वो है टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, TELEOLOgy. So let's begin with the ideas. So as per the thinkers, there are three prominent theories. There are three prominent theories. One is virtue theory. So as I have said, the virtue theory, basically it was glorified, popularized by Socrates, Plato, and of course the most prominent thinker is Aristotle. These are the, so I will explain in detail the ideas of Aristotle, but I do mention the Socrates and idea. In the virtue ethics, I will discuss the opinion of these three thinkers. We learn here the ideas. Then the deontological theories. Okay, so I will explain, I will differentiate these terms and the ideas. It was given by Immanuel Kant, was the prominent thinker who believe in this approach or ideas, whose opinion is contrasting than the ideas of Socrates. How his idea is different than their ideas, I will explain. What he emphasized. Okay.
According to Manuel Kant, what kind of conduct is called the conduct? What kind of action? Okay, what kind of the life a person has to live? So, and then teleology, teleological approach. Teleology means result based, consequence based. ये डियोंटोलॉजी है, जो डियोंट वर्ड है, इसका मतलब है ड्यू। टेलियोलॉजी का भी देखेंगे, टेलॉश वर्ड से डेवलप हुआ है। टेलॉस का मतलब होता है इंड, टेलॉस का मतलब होता है इंड, इंड है पर्पस, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। आप जो काम करते हैं उसके कुछ रिजल्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस, इसमें बिलीव करने वाले थिंकर्स, मैंने कहा जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, these are the thinkers, those who popularize these ideas, believe in this theory, develop this one, consequentialism भी कहते हैं, consequence of your work, okay, the result, को teleological approach भी कहेंगे, ये है। अब इसके भी तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। एथिकल ईगोइज्म, आप ईगो जो वर्ड यूज करते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एथिकल ईगोइज्म, ethical altruism, and ethical utilitarianism. So I will further explain what is the meaning of egoism, and utilitarianism, okay, and who believe in these ideas. क्योंकि मैंने कहा कि इन दोनों ने पॉपुलर किया, बट इसके अलग थिंकर्स हैं, इसमें भी डिवीजन है। इस अप्रोच के अंदर भी कई और डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिसको अलग अलग थिंकर्स ने करने की, ठीक है। तो वी विल लर्न फर्दर, बट लेट्स स्टार्ट विद द वर्च्यू एथिक्स। पहले मैं किससे स्टार्ट करूंगा? वर्च्यू से। तो अभी आपको ये भी समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्च्यू, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द इंटायर थियरी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का लिटरल मीनिंग क्या होता है? द मोरल बिहेवियर और द गुड हैबिट, उसको हम क्या बोलते हैं? द गुड हैबिट और द मोरल बिहेवियर, ओके, इज कॉल्ड वर्च्यू। इसका लिटरल मीनिंग समझ लो पहले, है ना। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द हिंदी में, सद्गुण, ठीक है ना। तो द मीनिंग ऑफ वर्च्यू इज सद्गुण, द गुड हैबिट। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्च्यू। द ऑपोजिट ऑफ वर्च्यू और द मोरल बिहेवियर, moral behavior. Now opposite of this term is vice. Later I will explain, when I will explain the theory. Vice is the opposite of virtue. इसका opposite होता है, इसका मतलब हो गया immoral behavior, immoral behavior और character, जिसका आचरण अनैतिक हो, ठीक है ना। So now virtue ethics, when you further I will, when I will describe, the virtue ethics emphasize over character of an good habit,
इसके ऊपर इम्फेसिस है कि किस तरह का लाइफ होना चाहिए या किस तरह का इंसान को ज़िंदगी जीना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कहेगा कि वैसा इंसान बनना चाहिए जिसमें अच्छे गुण हो, सद्गुण, जिसका चरित्र बेहतर हो। वर्चू एथिक्स इसके ऊपर एम्फेसिस कर कि जिस व्यक्ति, जिस इंसान का चरित्र बेहतर होगा, द कैरेक्टर हाई होगा, ओके, वो पर्सन वर्चुअस है। वर्चुअस किसे कहेंगे? हु बिकम द वर्चुअस? द पर्सन हैविंग द गुड कैरेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज कि on what basis we can differentiate that individual character is good or bad? कोई तो बेसिस होगा ना जिसके आधार पे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि गुड क्या, बैड क्या, है ना। लेकिन ये व्यक्ति के कार्य की समीक्षा नहीं कर रहे। दे आर नॉट लुकिंग एट द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट वन। They are not looking at the conduct of an individual. They are looking at character of an individual, behavior of an individual. इस ethics में importance किसके ऊपर दिया जा रहा है? कैरेक्टर और बिहेवियर के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर दिया जा रहा है, उसके चरित्र के ऊपर। तो ये जो थिंकर्स हैं ये कहते हैं कि एथिकल या मोरल पर्सन हम उसे कहेंगे जिसका चरित्र अच्छा हो। द पर्सन्स, okay, character will be very high and behavior is moral, then that person is virtuous. And if a person is virtuous, okay, his action will be moral. So they emphasize over there. So here I had mentioned that the virtue ethics, or it is also known as the ethics of character. Why it is known as ethics of character? Because this theory emphasizes over the character of an individual. First and foremost thing you should keep in mind, पहली चीज ये आपको दिमाग में रखना है, कैरेक्टर्स के ऊपर इसका फोकस है, चरित्र के ऊपर। ठीक है। And as you know, in our society also, the people right from your childhood, okay, always instigate you with what kind of character you have. Okay. On what basis the people judge? So basically, a question develop in a mind or created in a mind or contemplate, and you have to answer it. What sort of people we be? किस तरह का इंसान हमें बनना है? यह एथिक्स आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि what kind of individual or the people you must be, कैसा बनो। ठीक है। So for the virtue ethicist, and who were the virtue ethicists? The early virtue ethicists were Socrates, Plato, Aristotle. These Greco-Roman ancient thinkers are the early virtue ethicists, okay, or the thinkers. An action is moral or virtuous if it is performed through practical deliberation and not out of ignorance. Now try to understand. Already I had discussed with you people what kind of action is supposed to be the moral action if the action performed by individual deliberately, जब उसे पता हो कि उसके consequences क्या हैं और वो जानबूझकर अगर वो एक्शन करता है तो ही वो उसे हम जज कर सकते हैं whether that action is moral or immoral. Okay, not out of ignorance. जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, फिर एक्शन करते हो थ्रू योर इंस्टिंक्ट, तो वो या इग्नोरेंस, तो उसे हम जज नहीं करते। ठीक है ना, मोरल और वर्चुअस। So for the virtue ethicist, what I have mentioned, an action
is moral or virtuous if it performed through practical deliberation, okay, not by ignorance. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर बच्चा खिलौने तोड़ देता है तो बच्चे को नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है ना, या उसके पेरेंट्स ने उसे कहाँ से लिया था, उसके लिए उसने कितनी चीज़ें सर्च की थी या क्या कुछ किया था, बिकॉज उसे उसकी जानकारी नहीं है, वो इग्नोरेंट है। तो आप उसे उसके एक्शंस को मोरल या इमोरल नहीं कह सकते या वो जज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट एक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अमोरल। उसे हम अमोरल एक्शन कहते हैं या नॉन मोरल एक्शन कहते हैं, ओके, नॉट द मोरल एक्शन, बिकॉज दैट kid has performs or action without knowing the repercussion, without knowing the consequences, without knowing the result, okay, that action was out of ignorance, okay. So basically ये चीज है पहली. Now according to the virtue ethicist, ये मोरालिटी कैसे डेवलप होता है, नैतिकता आती कहाँ से, इवॉल्व कैसे होती है, स्टेम आउट कैसे होता है, ठीक है, अब उसको देखेंगे. So according to the virtue ethicist, morality stems from or develop from or evolve from what, identity or character of an individual. तो किस चीज के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, इंसान की आइडेंटिटी के ऊपर, इंसान के कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है. मोरालिटी कहां से डेवलप होगी, नैतिकता के पीछे, इट स्टेम्स आउट फ्रॉम और स्टेम्स फ्रॉम, ठीक है, द आइडेंटिटी और कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, rather than being a reflection of the action of individual. They won't believe, they are not judging the actions, they are judging the individual's characters, their identity. Virtue ethicist believes that the morality evolved from the individual's characters, the individual identity, not from the individual's action. वो क्या करता है उसमें नैतिकता नहीं छुपी है, या उससे हम जज नहीं कर सकते कि व्यक्ति क्या नैतिक है उसके रिजल्ट्स को देखकर या उसके एक्शंस को देखकर, उस, ठीक है ना, उसका क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एथिसिस्ट उसका चरित्र देखना, उसके आचरण देख, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट. गेटिंग माई पॉइंट, इज देयर एनी डाउट? I have discussed this paragraph. Any doubt? So let's understand. So where the virtue ethicist emphasizes, they emphasizes over the individual characters. Okay. Morality is stem from the individual character. यानी इनके अकॉर्डिंग वैसा व्यक्ति जिसके सद्गुण है, जिसके आचरण, वही बेहतर. कौन, किसके अनुसार, वर्च्यू एथिसिस्ट या हैं जो वर्च्यू थ्योरीज में भी करते हैं. नाउ अब है कि हु हैज डेवलप्ड दिस फिलोसॉफिकल ब्रांच. ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड दैट प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड अदर एंशिएंट ग्रीक्स थिंकर्स इवॉल्व दिस branch in ethics. They develop this theory. But apart from that, when you look at eastern part of the world, Confucius, आपने सुना होगा Chinese thinker, Confucius के बारे में. Confucius is also a virtue ethicist. So I had mentioned that, but in the East, Confucius, the Chinese thinker, was also having great contribution in the virtue ethics. ठीक है, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, Stoics having also contributed. So there are so many thinkers, those who believe in the same
ideas that individual's character is very much important and the morality must stem from the individual character. ठीक है, अब चलो देखते हैं. So I had given you a brief introduction of a virtue ethics कि virtue ethics का emphasis किसके ऊपर है और उसके propounder कौन है. Who is the propounder of the virtue ethics? The ancient Greek thinkers like Socrates, Plato, Aristotle, or the Eastern Chinese thinker Confucius, or Stoics is also a great thinker who also emphasizes virtue ethics. Okay, और भी देखेंगे. So what it makes? So the virtue ethics make us contemplate, to think over, to develop a question, what makes an action as right, or am I a right person? How you can get the idea कि तुम कैसे एक सही इंसान हो, कैसे चेक कर पाओगे? What are the way through which a individual can understand, okay, whether he is a right person or a wrong? The virtue ethics explain it. बताएगा कैसे पता लगेगा what makes an action as right, कि कैसे कार्य सही है या गलत कैसे पता लगेगा? ये virtue ethics. और इसमें थिंकर्स के ओपिनियन डियोंटोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोचेस से अलग होंगे, वो बाद में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना आसान होगा. वन बाय वन कवर करेंगे. ओके, तो बेसिकली व्हाट द वर्च्यू एथिक्स, इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ मोरल एजेंट. हियर हु इज द एजेंट? द इंडिविजुअल हु एक्ट. मोरल एजेंट किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो कार्य कर. So virtue ethics is basically describes the character of an moral agent, means character of an individual. Okay, as a driving force for the ethical behavior rather than the rules those set by the Kant. Immanuel Kant believes that there are certain rules which is developed by a society at large. If a person is following that rule, okay, and act accordingly, that person is moral and their action is. तो वो क्या बिलीव करते हैं? What he believe? He believe in rules. Immanuel Kant. Further I will explain कि हर समाज में, परिवार में, ठीक है ना, राष्ट्र में क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस. व्यक्ति अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अवॉइड करता है, फॉलो करता है, व्हाट डज इट मीन? इज वर्चुअस, इज. उसके अलग है कॉन्सेप्ट. यहाँ उस रूल्स के बारे में बात नहीं होती. Virtue ethicist believes that the individual character is very much important. Okay, so they emphasizing what is the driving force of the ethical behavior? Character of an individual. Okay, who is the driving force of a moral behavior? Your character, according to virtue ethics. Okay, now what is virtue? The virtue is the primary mode of evaluation as opposed to the act evaluates. इसके पहले तुमने देखा था कि लोगों के एक्ट को इवैल्यूएट किया गया, अभी वो एक्ट को भी इवैल्यूएट करते हैं लोग. आप देखेंगे एक्ट को इवैल्यूएट करने वाले हैं इमैनुअल कांट, केस में जर्मी बेंथम. लेकिन यहाँ पर्सन्स के एक्ट को नहीं इवैल्यूएट किया जा रहा है, यहाँ पर्सन्स के वर्च्यूज को इवैल्यूएट किया.
What is the virtues? The habit of a person, behavior, the good behavior or the good habit or the moral habit, उसको यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है वर्च्यू एथिक्स में. What the thinkers evaluate, and on the basis of which they thought that whether the person or immoral, their virtue, okay, not their act. So virtue is the primary mode of evaluation. Here I had mentioned, as opposed to the act. यहाँ action को evaluate नहीं करना है कि वो का वर्चू राइट है, रॉन्ग है, उसका चरित्र बेहतर है कि नहीं. अगर ये समझ आ गया तो ठीक है. कार्य की समीक्षा नहीं करते ये वर्चू एथिसिस्ट, तो उसका कार्य सही था कि गलत. इस चीज का इवैल्यूएशन करते हैं, वर्चूज का, कैरेक्टर्स का, उसकी हैबिट्स का. अगर आपके हैबिट गलत हैं तो कुछ लोग आपके एक्शंस को नज़रअंदाज करेंगे, आपकी हैबिट से ही जज करेंगे आपको कि आप सही पर्सन है, गलत है. So the virtue ethicist believes in that idea. Okay. So virtue is what? Virtue is the habit or a quality that allow the bearer to succeed at his or her in its purpose. Virtue क्या है? According to the virtue ethicist, it is a quality or a habit which helps you to attain your purpose of life. What is the virtue according to the virtue ethicist? What is it? ये क्या है? Is habit or quality. Okay, here I have mentioned that allows a bearer, that is an individual, kept this habit to achieve the purpose of life. Purpose of okay. So it is a habit or quality which the bearers kept, which help to achieve the purpose of life. Ethics talks about what is the purpose of life and how you are able to achieve it. Okay. तो कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू अ गुड हैबिट और थ्रू अ गुड क्वालिटी. अ इंडिविजुअल कैन अचीव द पर्पस ऑफ द लाइफ as per the virtue ethicist idea. Now let's understand. Here I had mentioned that the virtue ethics deals not only with any moment or events and stages, but the whole life. So it deals with the entire life. The virtue ethics deals with the entire life of an individual. Okay. Throughout my life, what should I do to do right and to look right? This is a question which is answered by the virtue ethicist. Virtue ethicist ने क्या explain किया? ये बताने की कोशिश की कि अपनी जिंदगी में throughout the life of an individual, ठीक ना, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे तुम सही कर सकते हो, ठीक है ना. शुड आई डू टू डू राइट. अच्छा करने के लिए, सत्कर्म के लिए क्या करना जरूरी है, ये एक्सप्लेन करेगा, ये बताएगा. सबसे पहला काम होगा चरित्र निर्माण करना. सबसे पहला काम होगा क्वालिटी डेवलप करना.
हैबिट्स डेवलप कर, ओके, सेट अ गुड स्टैंडर्ड. नाउ टू लुक राइट मीन्स लोग आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना. योर आइडेंटिटी एंड योर कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट. द पीपल मस्ट अप्रिशिएट यू एज अ राइट पर्सन. उसके लिए तुम्हें क्या करना है? द वर्च्यू एथिसिस्ट एक्सप्लेन इट. वो बताने वाले हैं कि क्या करना जरूरी है. तो इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, ठीक है ना, उसकी लाइफ में, जिससे वो उसके कार्य सही हो सके, वो बेहतर कर सके, और दूसरा कि वो बेहतर दिख सके. दिखना का मतलब समाज में जो दूसरे लोग हैं उनका नजरिया आपके प्रति ऐसा हो, आपको वो माने कि तुम सही. तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? लेट्स अंडरस्टैंड. You have to understand the virtue. Now, individuality must important. I had quoted some example. Say for example, I had given a example of a knife. सबके घर में होगा, है ना? So, the virtue of the knife is, what is the quality of a knife? Sharpness. चाकू हम क्यों लाते हैं? चीज़ों को काटना है, काटने के लिए उसे शार्प होना जरूरी है. हम किस चाकू को बेहतर मानेंगे? अगर शार्प होगा, है ना. उसका वर्च्यू क्या है? शार्पनेस. उसकी क्वालिटी क्या है? शार्पनेस. अकॉर्डिंग टू द वर्च्यू एथिस्ट, आप क्यों लाएंगे? आप चाकू ऐसा तो नहीं लाएंगे जिसमें जंग लगी हो, जो शार्प नहीं हो, जिससे चीजें कटे ही नहीं. आप उसे फिर किसको इंपॉर्टेंस दोगे? जो शार्प है. तो वर्च्यू ऑफ अ नाइफ इज व्हाट? शार्पनेस. अच्छा, अगर रेस कोर्स में आपको घोड़े दौड़ाना है, तो आप क्या देखेंगे? क्या वर्च्यू देखेंगे? तो स्पीड देखोगे. भाई रेस कोर्स में अगर आपको घोड़े को दौड़ाना है, ऑफ कोर्स आप उसकी स्पीड देखोगे ना. अगर आपको घोड़े परचेज करने जा रहे हो, व्हाट क्वालिटी और यूजर्स, आप स्पीड देखोगे. सो हियर आई हैड गिवन टू एग्जाम्पल. ओके, द वर्च्यू ऑफ नाइफ इज शार्पनेस. द वर्च्यू ऑफ द रेस हॉर्स, द स्पीड. So what does it mean? It means that to identify the virtues, okay, for human beings, try to understand. अब आपने दो एग्जाम्पल देखा, ठीक है ना, और उसमें भी लिविंग एंड नॉन लिविंग, आई हैड गिवन एग्जाम्पल ऑफ दैट. ओके, and now looking at that, when you have to identify the virtue of a human being, what you have to take care, one must have an account of what human purpose is. आपको ये देखना होगा कि उसका पर्पस क्या है. जैसे रेस हॉर्स का पर्पस है घोड़ा को हमें दौड़ के जीतना है, पर्पस हमें पता है. तो जीतेगा कौन? इसकी स्पीड बेहतर होगी. पर्पस तुम्हें पता है ना. पर्पस क्या है? कि रेस कोर्स में जब घोड़े दौड़ेंगे तो उसको, उसके दौड़ को जीतना है. तुम घोड़ा खरीदने जाओगे तो ऑब्वियसली देखोगे जो हेल्थी हो, जो फिट हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो, वैसे हॉर्स को लेकर आएंगे. यानी पर्पस तुम्हें पता था. नाइफ लेने जाते हो तो पर्पस पता है कि मुझे इसे कट करना है, तो कट करना है तो शार्प लेंगे, ठीक है. उसी तरह से अगर इंसान को आपको जज करना है तो पहले उसका पर्पस देखिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन बीइंग? जितने भी इंसान हैं उसका पर्पस क्या है? वाई वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? कुछ तो पर्पस होगा ना इस क्रिएचर का भी. So according to the virtue ethicist, first of all, we have to understand the purpose. And in this
morality stems from the identity or the character of an individual, as I have said earlier, rather being reflection of the action. कॉन्सिक्वेंस एक्शंस पे नहीं डिपेंड करता है ऑफ एन इंडिविजुअल, कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज द पर्पस इज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हाट, टू टेक केयर ऑफ अदर्स. ओके, टू लिव हैप्पीली, पीसफुली. दिस इज द पर्पस ऑफ द लाइफ. रिलीजन में है मोक्ष प्राप्त करना, यहां है हैप्पीनेस, पीस, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी. So when you are living in a society and you wanted peace and happiness, तो अगर सारे इंसान के कैरेक्टर अच्छे हों, हैबिट अच्छी हो, वैसा समाज स्वस्थ होगा, शांति प्रिय होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग. वहाँ एक्शंस को जज नहीं करते ये, दे आर निग्लेक्टिंग द एक्शन, they are emphasizing over the character of an individual. ठीक है, same things I had described in it. Now let's understand. Already I had mentioned about Socrates. ठीक है ना? When you talk about the Socrates famous statement was an unexamined life is not worth living, है ना? इसके बारे में मैंने बताया था. Socrates is a person with very high character. Okay, so his character is always appreciated by the people, and he believed in questioning. He was a rational man. He always believed in a reason. वो हर चीजों में तर्क देना पसंद करते और लोग वो कहते थे पर्सन को तार्किक होना. बोला क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने. और जिस समाज में क्वेश्चंस पूछने की छूट ना हो, बोला वो समाज बेहतर नहीं. Unexamined life is not worth living. Even you have to ask what is the purpose of your life. Okay, and you must develop the argumentative behavior among the kids. जैसे देखते हैं समाज में बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, अभी छोटे हो, अभी बच्चे हो. तो हम उनकी क्यूरियोसिटी को एंड कर देते हैं, उनके क्वेश्चंस एबिलिटी एक्सप्रेस कर. व्हाट द सॉक्रेटिस बिलीव्स दैट, बोला अनएग्जामिन्ड लाइफ is not worth living. You must raise the question, appreciate, try to find out the answers of that question. But it may be harsh sometimes. So they started asking the questions to the rulers. They started developing, okay, various regions behind different things. They try to explain various phenomena in their own way. But that society was quite orthodox and religious. Okay. The religious theologians was against the Socrates. Along with the rulers, they captured Socrates because Socrates became very popular in the society through their argumentative behavior, through their questions, through their reasons. Started liking Socrates. So the theologian,
those who are basically orthodox, okay, along with the rulers, they captured him. And as I have said that when you go through the dialogue in Crito, okay, their disciple has stated him that you must escape from this imprison. He was imprisoned. Okay, तो उन्होंने क्या कहा कि एक तो इमोरल एक्शन किया उन लोगों ने, फिर मैं भी करूँगा, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। तो फिर मैंने इतनी ज़िंदगी तक लोगों को जो बताया है कि मोरालिटी क्या है, ठीक है ना, वर्च्यू क्या है, फिर लोग मेरे से ही। तो ही डिनाइड. So Socrates was also believer, firm believer of a virtue. Okay. Now, when we talk about Plato, the disciple of Socrates, this is the time period of the Plato. Okay. Ancient Greek philosopher, was one of the finest philosopher of the Greek traditions, and he was also the teacher of Aristotle and the founder of the academy in Athens. The capital. Academy खोला. And his notable works include Apology, Phaedo, Republic, the Laws, the Meno, the Symposium. अब ये जो है that is a fact. अब एथिक्स में ऑब्जेक्टिव तो आता नहीं, ठीक है, कि आपको फैक्ट्स याद करने हो, बट ये उनके कुछ वर्क हैं. उसमें से एक मोस्ट फेमस वर्क है रिपब्लिक. जितने भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे एथिक्स की, रिपब्लिक मेंशन जरूर हो, और कोई बुक्स मेंशन हो या नहीं हो, ठीक है, तो ये बार बार आपके सामने आएगा कहीं भी पढ़ोगे. तो एटलीस्ट यू मस्ट कीप इन माइंड दिस रिपब्लिक. One of the important ways, according to Plato, of philosophizing was the dialogue. What he believed? He also believed in dialogue, conversation. और उनकी जो बुक है रिपब्लिक, इसमें भी डायलॉग है, इसमें भी कन्वर्सेशन. एंड कन्वर्सेशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू इन्होंने अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाने. आपने ड्रामा सुना है? ड्रामा, वो ड्रामा जो होते हैं इनमें कैरेक्टर्स होते हैं, पता है आपको ना? Yes, sir. और इन कैरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर रोल असाइन होता है और उनके लिए स्पेसिफिक डायलॉग्स होते हैं, वो कन्वर्सेशन, ठीक है. तो इन द प्लेटो आल्सो बिलीव इन डायलॉग. ही फिलोसफाइजिंग हिज आइडियाज थ्रू डायलॉग. ओके, अपनी बातों को कैसे रखते हैं? बातचीत, वो समझाने की कोशिश करते हैं थ्रू कन्वर्सेशन. इनका तरीका ये है, इनकी किताबों में डायलॉग्स को प्रेफरेंसेस दिया गया है. थ्रू कन्वर्सेशन ही ट्राई टू एक्सप्लेन हिज ओन आइडियाज. ओके, एंड ही आल्सो एम्फेसाइज्ड ओवर द डायलॉग. बोला कि कन्वर्सेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. व्हेन यू कन्वर्स द पीपल यू अंडरस्टैंड देयर वर्च्यूज, के हैबिट्स का आपको आइडिया लगेगा, उनके कुछ का आइडिया लगेगा, है ना. So he emphasized over. Even one of his most important work I had mentioned, Republic, has all the discussion happening in the form of dialogue. And Republic contains very important dialogue on the virtue ethics. उसी डायलॉग के थ्रू ही उन्होंने वर्च्यू एथिक्स, ठीक है ना,
उसको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ एन इंडिविजुअल लीड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट ही हैज टू डेवलप, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही हैज टू बी। He explained everything through dialogue or conversation in Republic. So that's why Republic is very, very important text. Okay. Here I had mentioned that in Republic, the Plato has mentioned ethics, which is based on eudaimonia. Okay. Is a Greek word. Eudaimonia. Eudaimonia is a Greek word. Aristotle also explained it very beautifully. उनके गुरु ने भी, बट इस वर्ड को ज्यादा ग्लोरीफाई एरिस्टोटल ने किया है. बट प्लेटो इन द रिपब्लिक, द प्लेटो हैज मेंशन्ड दिस, मेंशन्ड एथिक्स विच इज बेस्ड ऑन यूडेमोनिया. अब एथिक्स बेस्ड ऑन यूडेमोनिया क्या है? यूडेमोनिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ये ग्रीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हैप्पीनेस, वेलबींग. व्हाट इज द मीनिंग? हैप्पीनेस, वेलबींग. What is the purpose of human life? Well-being, happiness. Okay, so ethics which is based on eudaimonia. He believe in this. He explained this in Republic. Okay, इनके शिष्य जो हैं एरिस्टोटल बाद में इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, भी इसमें बिलीव करेंगे. इसका मीनिंग तुम्हें समझना होगा. का लिटरल मीनिंग होता है हैप्पीनेस, वेलबींग. ठीक है ना? इसका eudaimonia. So whenever you explain the virtue ethics, you must keep in mind this term eudaimonia को याद रखना है. ठीक है ना? Now, is it clear now? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? Now, Plato argued for knowing yourself. सबसे पहले प्लेटो ने किस चीज के ऊपर इंफेसिस दिया? पहले खुद को तो जान लो. ठीक है? Knowing yourself. He believe in this. And in a dialogue on virtues, the Plato says that state, community, and philosophy can play an important role in helping the persons to live a virtuous life. So, what are the factors which develop a virtue in an individual? The factor is a state, the factor is community, the factor is philosophy. What are the factors which develops the good habit within an individual, a good character within an individual? That is the state, community, and philosophy. Say, for example, what is the meaning? Let's understand. What is the philosophy? The first of all, अब ये दर्शन तो एक बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन when you are upbringing in a particular society,
कम्युनिटी समझते हैं किसे कहते हैं? कम्युनिटी, द ग्रुप ऑफ द पीपल, इसी को समुदाय कहते हैं। अब क्या होता है कि जब तुम सोशियोलॉजी पढ़ोगे उसमें कम्युनिटी के मीनिंग्स बदल जाते हैं, और बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें कम्युनिटी बदल जाते हैं। जैसे सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो कम्युनिटी समुदाय लैंग्वेज के आधार पे अलग होता है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। धर्म के आधार पे अलग होता है, रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है ना? अब रिलीजन में नंबर्स किस रिलीजियस कम्युनिटी का ज़्यादा है समाज में जो रह रहे हैं, उसके आधार पे मेजॉरिटी रिलीजन रिलीजियस कम्युनिटी और माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी, है ना? तो when you are learning a different subject, the similar word having different, when you learn community in a biology or in ecology, तो वहां कम्युनिटी किसे कहते हैं? द assemblage ऑफ वेरियस स्पीसीज और पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम। जब एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही समय में एक से ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, जनसंख्या, जैसे आप रहते हो वहां गाय बैल भी हैं, वहां इंसान भी है, वहां बर्ड्स भी है, वहां पेड़ पौधे भी हैं, वो समुदाय बनाते हैं। सो द मीनिंग इज डिफरेंट। वी आर लर्निंग हियर द फिलॉसफी, एथिक्स। हम यहाँ कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, ये कम्युनिटी बात करता है असेंबलेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है? अब जब आप समाज में रहते हो, समुदाय में रहते हो, लोगों के बीच रहते हो, तो लोगों से सीखते हो। हर समाज में एक फिलॉसफीज है जो कि वहां पर largely the people believe in that. In a particular community, say for example, when we talk about in our society, जब हम अपने समाज की बात करें, अपनी कम्युनिटी की बात करें, तो अपनी कम्युनिटी में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूरल और अर्बन कम्युनिटी। ठीक है ना? ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, उनकी सोच, उनके वैल्यूज अलग होते हैं, और शहरी परिवेश में आने के बाद परिवर्तन हो जाता है। अभी मॉडर्न टाइम पीरियड की मैं बात कर, एंशियंट ग्रीक्स में भी कुछ शहर डेवलप हो चुके थे। एथेंस वाज अ सिटी वेर ही सेट अप हिज एकेडमी। बात समझ में आ रही है? और कुछ ग्रामीण परिवेश भी। तो क्या कहा प्लेटो ने? प्लेटो ने कहा एक फैक्टर समुदाय भी है। जो वर्च्यूज है, जो हैबिट्स है, आप कुछ समुदाय से भी लर्न करते हो। उसका बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल है इंसान के आचरण, चरित्र के विकास में। उसी तरह राज्य का भी, अगर रूलर में विजडम है, नॉलेज है, रैशनल है, समाज बेहतर ग्रो। अगर रूलर में विजडम नहीं है, करेज नहीं है, पता चला कोई दूसरा आया और आपके एरिया को कैप्चर कर लिया और अपनी आइडियोलॉजीज आपके ऊपर डाल रहा है, मे बी वो एक्सप्लॉइट भी करने लगेगा। दैट अफेक्ट्स द वर्च्यू ऑफ एन state. Also play a very significant role in the development of an individual character. So underlying philosophy of the state, underlying philosophy and the values of a community also play a very significant role in the development of individual character. Getting my point? So what are the major factor? According to the Plato, the major factor is the state, community, and the philosophy which is underlying in this play a very significant role in helping the person to live a virtuous life. जहां मारपीट, चोरी, डकैती, अराजकता होगी, जिस राज्य की सुरक्षा
वहां पे वर्चुअस लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल है. तो स्टेट हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट contribution and role. ठीक है. Now it has many dialogue which had with his students in his republic. He has conversed with his students on the virtue, और according to the Plato कि just person किसे कहते हैं. ठीक है. Who's supposed to be the just person? Who believe in justice? Just person. देखो, the ethical person just is someone who is control of himself, and he does not get driven by his desire. Not driven by his desire. जो self control कर सकता हो. According to him, that is the just person. Now, this term you must keep in mind. Okay. So, who is the person with the high moral character? What is the meaning of just person? A person with a high moral character who is able to control himself, not driven by desire. Okay. Such person, according to Plato, are the moral person, are ethical person, are just person. Okay. So you must write this statement inverted comma, because this is very important. हम जानने वाले हैं ना कि एथिकल पर्सन किसे कहेंगे, मोरल किसे कहेंगे. जो सेल्फ कंट्रोल कर ले, जो अपने डिजायर्स पर कंट्रोल जानता हो. ठीक है ना. नॉट ड्रिवेन बाय डिजायर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. He emphasized over 4 cardinal values. Okay. ये वर्चूज, 4 वर्चूज के ऊपर ये इम्फेसाइज करते हैं. कौन? प्लेटो. टू बी अ गुड मैन. हाउ यू बी अ गुड मैन, यही ढूंढ रहे थे. बोला ये जिनमें होगा वर्चूज वो गुड मैन होंगे. अब ढूंढिए आप में भी है कि नहीं है. ढूंढ लोगे अगर, तो अगर होगा तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो आप गुड मैन है, अदरवाइज यू आर अ बैड मैन. So the first one is the wisdom or the knowledge. The first one is the wisdom. He emphasized over, but he largely emphasized on these values. सबसे पहले करेज और विजडम को emphasize किया. अब देखो, करेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और जो वर्च्यूज हैं और जो वैल्यूज हैं वो करेज में हिडन है. ठीक है ना. क्या है? द करेजियस पर्सन्स आर ऑल्सो हैविंग पेशेंस. अकॉर्डिंग टू हिम, जो ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज हैं, इसके अंदर और भी वैल्यूज छुपे हुए हैं. जैसे पेशेंस, जेनरोसिटी इज रूटेड इन करेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो. जो व्यक्ति करेजियस होगा वो उसमें पेशेंस भी हो, जेनरोसिटी भी होगा. एज पर द ओपिनियन ऑफ प्लेटो, courage is the most vital virtue of an individual. Okay. So whatever the purpose of life, if you are not courageous one, you are not able to attain purpose. Next, the wisdom. The wisdom comes from understanding the moment, understanding the event, understanding the individual personality, understanding the circumstances and situation. According to Plato, this is the most vital virtue of an individual.
होना चाहिए हर इंसान में, विजडम, नॉलेज. Okay. Now, what is the another virtues according to temperance? It stands for balance or equilibrium. What it stands for? Balance or equilibrium. Okay. इंसान को परिस्थिति में संतुलन भी स्थापित करना आना चाहिए. टेम्परेंस. इंटरव्यू में गए हो और इंटरव्यूअर ग्रिल कर रहा है और खड़े होके तुमने रेज होके बोल दिया, आपको बता रहा हूँ, आपको सब बार बार एक हो गया गेम. यू नीड बैलेंस, इक्विलिब्रियम, टेम्परेंस इन योर लाइफ. ये आपके कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है टेम्परेंस. तो ही टॉक अबाउट, इसी से डेवलप होता है चैस्टिटी, कंटेंटमेंट, ट्रस्टवर्दीनेस, कम फ्रॉम दिस वर्च्यूज. ठीक है ना. इसी से डेवलप होता है. तो इससे अंडरलाइंग वैल्यूज, इसमें और भी छुपी हुई वैल्यूज हैं. इफ यू डेवलप दिस, दिस ऑल्सो डेवलप होगे. ट्रस्टवर्दीनेस आता है, यू बिकम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. Now, the last one according to him is the justice. Justice stands for fairness. Okay. Justice comes with mercy. Okay. So it stands for fairness. And from where it evolved? Mercy. So he emphasized on justice also. What is the meaning of justice? The fair behavior with every person. Okay. So keeping in mind all, समाज में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है. आप एक के फायदे के लिए नहीं सोच सकते, आप सभी के फायदे के लिए. जस्टिस. So these are the four cardinal virtues as per the Plato. You should keep in mind because it has been asked. Sir, how generosity is developed by courage? What is the meaning of generosity? दयालुता. उदारता. नहीं. विकेड व्यक्ति जो होगा, कमजोर, वो उदार भी नहीं होगा. Courageous person is much more because he has ability to do. Generosity का मतलब उदारता है किसी के प्रति. जो खुद कमजोर है वो क्या उदारता दिखाएगा? जो courageous है, he can take a decisions firmly, and when he took the or she took the decision firmly, okay, he has also the ability in a specific conditions, he also must show the generosity. ऐसे जो लोग हैं ना, विकेड लोग, कमजोर लोग, ठीक है ना, ऐसे लोग संभावनाएं अच्छी हैं तब तक तो उदार हैं, जहां सर्कमस्टांसेस भी उदारता भी. बट सच कंडीशन इज नॉट विद दिस पर्सन. इनके अंदर वो क्वालिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज इन एवरी सिचुएशन they are courageous. So in every situation
देयर हैबिट वोंट कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। He also explained tripartite nature of soul, state and virtues. ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, रूलर कैसा होना चाहिए? द रूलर और जो गार्जियन या सोल्जर्स हैं वो कैसे हों? दे मस्ट हैव द विजडम, नॉलेज, bravery and courage, as well as these soldiers must be loyal to the state, and that's why they are able to protect the life. चाहिए ना? डर कैसा होना चाहिए? वह जिसमें विजडम हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, हाउ टू, what is the need of the man, what is the need of the society, how to protect the state, what are the virtues required in a soldier, a guardian, a protector. Courage, loyalty, bravery. अगर ये नहीं है तो the person is not virtuous, not fit. Okay, unethical. So they must having some reason, rationality must be developed, spirit to protect the state. They must have the guardian must have the spirit to protect the state, and how he can protect the state? By developing होना 100% के रूप भाग जाएगा, सही सरेंडर कर देगा। राजा विकेट होगा, विजडम नहीं होगा, ठीक है, तो वो समाज को नहीं चला पाएगा, राज्य को नहीं चला पाएगा, वो रैशनल रीजन डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाएगा। उसी तरह सिटीजन्स में एपेटाइट होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए, ठीक है ना? सिटीजन में टेम्परेंस होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेंस? क्या बताया था? तो The balance of द equilibrium. बैलेंस in among the citizen there are so many people, those who raise their livelihood through different means, and that created a balance in a society, because everyone's role is very very important. A role of carpenter is important, the role of black, the role of gold pot makers, every role is very vital, and they must appetite to serve the society, to create a peace and to maintain a balance. Very required, very much according to the Plato. I'm just giving you the opinion of Plato. Are you getting my point? Yes or no? कि राजा के लिए, सोल्जर्स के लिए और नागरिक के लिए क्या क्या वर्चूज जरूरी है, ये प्लेटो ने बताया। राजा के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, उसको सिचुएशन की समझ होनी चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए। सोल्जर्स में ब्रेवरी, करेज और लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट होना चाहिए, तभी वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। और नागरिकों में एपेटाइट होना चाहिए, सर्व द स्टेट, टू बिकम लॉयल टुवर्ड्स द स्टेट, टू डेवलप इक्विटी इन द, दैट्स व्हाई वी मेंटेन ट्रांक्विलिटी। Getting my point?